Hello students, today I am going to start class 12th chapter, that is genetics. The term genetics was given by William Burton in 1905. So genetics जो term है वो दी है William Burton ने in 1905 में. And what the genetics is? Genetics की बात करते हैं तो genetics is the study of heredity and variation. Or we can say that genetics is the branch of life science which deals with the study of heredity and variations. Now what the heredity is? Heredity is the transfer of character from one generation to another. That is like begets like. It means every organism produces a species of their own kind. And what the variation is? Variation is the differences in character which occurs amongst the member of same species. All of you know that all the offspring of the same parent are not similar, or we can say that all the organisms of the same species, they are not similar, they show certain differences, and the differences in character amongst the member of the same species, the term is a variation. Now what inheritance is? Inheritance is the process by which an offspring cell or organism acquire or became predisposed to characteristics of its parent cell or organism. तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जोहन मेंडल. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स दैट इज विलियम बर्सन. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन. फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स दैट इज ए गैरेट. एंड फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ जेनेटिक्स इज एल्काप्टोनेरिया. नाउ वी टॉक अबाउट सम जेनेटिक टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज कैरेक्टर. करेक्टर है क्या? करेक्टर को सिंपल टर्म में हम बात करें तो करेक्टर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे हाइट, कलर, शेप, हम बात करें साइज की, सो ऑल द फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ करेक्टर. सो करेक्टर इज अ मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन. न्यूड सी बात है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन से करेक्टर प्रोड्यूस होंगे डिटरमाइन करेगा कि उसमें जीन जो हैं वो कौन से एक्सप्रेस हो रहे हैं. सो करेक्टर्स की हम बात करते हैं तो करेक्टर जो हैं what type of character an organism show depends on the expression of gene within the organism. Now next is your trait. The character and traits की बात करें, both are the same thing but little bit different. We consider character की मैंने बात की तो मैंने बोला कि character is the height, but what is the trait? अगर हम height की बात करते हैं, height की फॉर्म है, टॉल भी है, ड्रॉप भी है. अगर मैं कलर की बात करूँ, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ कलर, दैट इज ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. अगर मैं बात करूँ शेप की तो हमारे पास शेप भी डिफरेंट टाइप्स के शेप हैं. सो करेक्टर जो हैं ये मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन उस मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म क्या है उसे हम बोलेंगे ट्रेड. सो ट्रेड जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेक्टर. मीन्स अगर मैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली हुई है कि अगर मैं बात करता हूँ करेक्टर इज द हाइट, लेकिन हाइट की फॉर्म क्या है? हाइट की फॉर्म या तो टॉल है या तो ड्वार्फ होगा. सो टॉल एंड ड्वार्फ आर द ट्रेड्स. इसी तरह से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक टॉक अबाउट कलर, कलर इज द कैरेक्टर एंड रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, दे आर द ट्रेड्स. सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम बोलते हैं ट्रेड, एंड कैरेक्टर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज योर जीन. जीन की बात करें तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमेट्स एंड रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर. सो व्हाट द जीन इज? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to another or from parents to offsprings. Now जीन की हम बात करते हैं तो जीन जो है ये ट्रांसफर करता है करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमेट्स एंड रेगुलेट करता है द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर्स. एंड जो टर्म जीन थी वो दी थी जॉनसन ने, और द केमिकल नेचर ऑफ जीन इज डीएनए. ओके, सो नेक्स्ट इज योर जीन. जीन की बात करें तो जीन इज द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, एंड डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ व्हाट द एलील इज? यू नो दैट जीन जो है वो अपने आप को सिंगल एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑलवेज व्हेन दे आर प्रेजेंट इन पेयर. In the pair form of gene, we use term allele, and mainly we have two allelic form, that is one is dominant, another is recessive. But multiple allele में we have multiple form too.
सो सबसे पहले एलील जो है दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट इन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. So what the gene is? Gene, the form of gene used to allele. In the same way, character and different form of character used to are traits. So gene responsible for controlling a specific type of character. In the same way, alleles जो हैं they are responsible for controlling a specific type of trait. Now what the homozygous and heterozygous is? मैंने आपको अभी बोला कि जीन जो है वो ऑलवेज अपने आप को क्या करते हैं, पेयर में एक्सप्रेस करते हैं, एंड इस फॉर्म को हम बोलते हैं व्हाट यूज्ड टर्म एलील. नो होमोजाइगस, अगर सिमिलर एलील प्रेजेंट है किसी भी डिप्लॉयड क्रोमोसोम पर तो हम कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस. सो होमोजाइगस इज द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील ऑफ अ कैरेक्टर इन अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम. यहाँ पर मैंने जो जीन्स को या एलील्स को मैंने यहाँ पर लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पर जो कैपिटल लेटर है एंड लोअर केस लेटर, कैपिटल लेटर जो है मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डोमिनेंट को, एंड लोअर केस लेटर मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव कैरेक्टर को. सो हियर कैपिटल टी बोथ आर द सिमिलर, बोथ आर द allele. Here small t they are similar, they are allele. So capital T are responsible for example अगर capital T जो है कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर, दैट इज कैरेक्टर इज व्हाट, tall, and small t जो है it control the character, that is dwarf. So these allele are similar, so condition is known as homozygous. What the heterozygous is? Heterozygous की बात करते हैं तो heterozygous it is the presence of dissimilar allele of a character in a different chromosome. For example अगर मैं यहाँ पर बात करूँ so ये पेयर है किसका, जीन्स का, लेकिन एक कैपिटल टी एंड अदर इज स्मॉल टी. सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हम बात करें दे आर डिसिमिलर, सो कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस. नो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो एलील है ये डिसिमिलर है तो कौन सा फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो नील सी बात है जो डोमिनेंट दैट इज कैपिटल टी वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. सो हेमिजाइगस की बात करें तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ अ कैरेक्टर इन अ डिप्लॉयड सेल. नाउ व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ कैरेक्टर. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जीनोटाइप्स आज जीन को रिप्रेजेंट किया है लेटर्स में. सो हियर द जीनोटाइप इज कैपिटल टी फॉर tall, that is homozygous tall, capital T small t being dominant, so यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट ये होगा heterozygous tall, small t that is for dwarf, homozygous dwarf. So genotype is the genetic makeup, लेकिन वो जीन कौन सी एक्सटर्नल अपीयरेंस प्रोड्यूस करेंगे उसे हम बोलेंगे फिनोटाइप. सो इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर that is either tall, dwarf, yellow, green, wrinkled, round. So all these are the external appearance of किसका, लेकिन character or the genotype. So genotype is the genetic makeup of a character and phenotype is the physical appearance produced due to the expression of the genotype. Now what the phenocopy is? अब फिनोकॉपी की बात करते हैं. मैंने आपको बोला कि वी हैव द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए, एंड स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए. दो डिफरेंट जीनोटाइप हैं और दोनों डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अंडर certain environmental condition or external condition, if these two different genotype produce similar phenotype, then the condition is known as phenocopy. So phenocopy, when two different genotype which normally produce different phenotype, मतलब अगर जो दो डिफरेंट जीनोटाइप हैं जो नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट फिनोटाइप, लेकिन अगर वो प्रोड्यूस करें सिमिलर फिनोटाइप ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन, देन कंडीशन को बोलेंगे फिनोकॉपी. ओके, सो नेक्स्ट इज डोमिनेंट कैरेक्टर. डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें तो डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, एंड व्हाट द रिसेसिव्स व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. एक्चुअली मेंडल ने जब डिफरेंट क्रॉसेस परफॉर्म किए थे तो ही फाउंड दैट इन F1 जनरेशन आउट ऑफ द टू कैरेक्टर ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ. For example, if he crossed that is homozygous tall with homozygous dwarf, then if F1 generation homozygous tall express themselves, it means out of two character only one character express themselves. Okay, so एक character अपने आप को express किया F1 generation में, जो अपने आप को express करेगा उसे हम बोलेंगे dominant, and the character whose expression gets suppressed in presence of dominant gene उसे हम बोलेंगे recessive character. लेट भी आगे हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें. उसके बाद है ऑफस्प्रिंग.
Progenes produced from sexual reproduction. And what the siblings are? These are the progenes, the genes of same parent produced at different time. What the genome is? Sum total of all genes present on haploid number of chromosome. Then which gene pool? Sum total of all gene of all the organism of a population constitute the gene pool. What the inbreeding is? Breeding between closely related member of a species that is similar genome. It increases homozygosity in the offspring. And what outbreeding? Outbreeding की बात करें तो breeding between distinctly related member of the species और ये increase करता है, it increases heterozygosity in the offspring. So inbreeding increases homozygosity and outbreeding increases heterozygosity. Next is your hybrid vigor or heterosis. Means superiority of hybrid over their parent and it's not permanent. It may decreases by inbreeding, जिसे हम बोलते हैं inbreeding depression, or it may be maintained by outbreeding. This is all about for today. Thank you.